Good evening, viewers. You're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. Once again, the only thing we urge is keep yourself away from any type of ideology, possibly, if it's possible, away from agenda, politics, religion, and listen in to Bilkis Bano. Politics, ideology, agenda, religion. Can India keep that aside and listen to Bilkis Bano? 2002, 20 years ago, she was 21 years, 5 months pregnant with a 3-year-old daughter, Saleha. 11 men took turns to rape her, snatching away her 3-year-old daughter, Saleha, smashing her head on a rock, raping her mother, her 2 sisters, and killing 14 people. 2022, 20 years since, Bilkis, now 41, is numb to see her rapists walk out of jail prematurely. Released by the Gujarat government under the remission policy, and she, Bilkis Bano, the proverbial daughter of India, is speaking to her country by releasing a statement. The release of these convicts has taken from me my peace and shaken my faith in justice. My sorrow and my wavering faith is not for myself alone, but for every woman who is struggling for justice in courts. I was bereft of words. I am still numb. Today, I can say only this. How can justice for any woman end like this? I trusted the highest courts in our land. I trusted the system, and I was learning slowly to live with my trauma. These 11 convicts had served more than 15 years in jail, after which one of them approached the Supreme Court with a plea for premature release. The apex court directed the Gujarat government to consider or reject his plea. The state formed a committee of 11, which unanimously considered, accepted to free prematurely these rapists and murderers. So who were these 11 who allowed these savages to be freed prematurely? BJP MLA Suman Chauhan, BJP MLA C.K. Raulji. Taken in capacity of social workers were 2 BJP leaders. Murli Mulchandani, BJP leader. He was also a witness in the Godhra train carnage. Sneha Bhatia, head Mahila Morcha BJP Godhra wing. Sujan Maitra, collector Panch Mahal. District SP Panch Mahal. Jail IG, jail superintendent. 3 Home Department officials. The criticism, especially from the opposition, the committee that awarded freedom to rapists and murderers, has 4 BJP leaders and 3 officials attached to the Home Department. While questions must be asked of the Gujarat BJP government, the silence of other political parties is ominous. Both BJP at the centre and the state silent. The Aam Aadmi Party entering the communally charged political Gujarat amphitheatre silent. The Congress very vocal nationally, regionally tepid. Gujarat goes to election in 2 months. The gang rapists of Bilkis being freed prematurely is politically inconvenient for political parties and a communal hot potato. But what is it that stops India? As a country, India owes an apology to Bilkis. As a country, India should demand her rapists are returned to jail. As a country, if we the people of India don't stand with Bilkis Bano, then we, the people of India, never stood for Jyoti Pandey. We never stood for Nirbhaya. With Bureau Inputs, Preeti Chaudhary, India Today. So away from politics, viewers, the question we ask on To The Point this evening: does India owe an apology to Bilkis Bano? Have we chosen somewhere down the line, some of us, to stand by barbarians and not with Bilkis? Joining me this evening is Bilkis Bano's husband. याकूब जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। मेरा पहला सवाल यही है, बिल्किस अभी कैसी हैं, क्या कहती हैं? जब उन्होंने एक ये प्रेस रिलीज
जो लेटर कल रात को रिलीज किया, उन्होंने कहा कि उनका दिल दुखता है, वो थोड़ी उनको समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। ये जो उनको एक झटका लगा है कि 11 आरोपी को एक गुजरात सरकार ने जो किसी चीज के बारे में बताए बगैर उनको छोड़ दिया गया है, और अचानक से मालूम पड़ता है कि 11 आरोपी को छोड़ दिया गया है, तो बहुत सदमे में हो चुकी है बिल्किस। सदमे में उन्होंने खुद ही जो कल लेटर रिलीज किया, उन्होंने बोला था कि मुझे एक सदमा लगा है, और उन्होंने एक चीज और बोली है याकूब जी कि जो कोर्ट ने उन्हें बहुत सराहा था। कोर्ट ने उन्हें कहा था जब 2008 में इन 11 लोगों को उम्र कैद हुई थी, तब कोर्ट ने उनका जो करेज है, उनका जो मनोबल है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा था। क्या बिल्किस को अभी कोर्ट पे विश्वास है? इसने जो कोर्ट पे विश्वास था और जो कोर्ट पे इतना बड़ा भरोसा, और देश की न्याय तंत्र ने हमको न्याय दिया है, हम उनका सम्मान भी किया है, लेकिन आज जो इस तरह का जो घटना हुई है तो बिल्किस का न्याय तंत्र पे थोड़ा डगमगाने का उम्मीद ऐसी हो गई है कि वो डर गई है। पिछले 20 साल से आप हमेशा कहते रहे हैं, बिल्किस हमेशा कहती रही हैं कि थोड़ा डर रहता था हमेशा, पर अब ये जो 11 दरिंदे हैं ये वापस आ गए हैं आप ही के गांव में, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में, आप ही के शहर में। अब कितना डर है याकूब जी? बिल्किस कुछ कहती हैं इसके बारे में? क्योंकि अब उनको देखना पड़ेगा हर दिन उन्हीं लोगों को। देखो, हम तो पहले से एक दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं, हम डर के वजह से, और जो लोग पैरल पे आते थे तब भी उनका हमको डर था, और उनको लेकिन अब वो जो पूरी तरह छूट के आ गए हैं तो सबसे ज्यादा अब डर हो चुका है। क्या डर लगता है याकूब जी? आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? आरोपी के हिसाब से डर है ना जी, आपको लगता है आरोपी वही तो हैं? हम आप बाकी की जिंदगी कैसे जिएंगे, वही सबसे बड़ा डर है बच्चों के साथ। बाकी की जिंदगी कैसे जिएंगे वही सबसे ज्यादा डर है। पर याकूब जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में आज, बहुत लोग हैं जो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। जो बिल्किस ने कल चिट्ठी लिखी, कहा कि जो 11 के 11 दरिंदे हैं उनको वापस जेल में किया जाए, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये सपोर्ट महसूस हो रहा है अभी? बिल्किस के साथ जो आज हुआ है, बिल्किस के साथ जो हुआ है, तो हम वही कह रहे हैं कि हमको हमारा देश का सपोर्ट चाहिए। जो बिल्किस के साथ इनकी 18 साल की लड़ाई, इतना बड़ा इनके साथ हादसा हुआ, क्योंकि हम इतने मायूस हैं कि हम बिल्किस अभी किसी से बात करने के लिए उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है, और बहुत बड़ी हमको तकलीफ पहुंची है ये सब चीजें। याकूब जी, आपका हक है कि आप एक जुडिशियल रिव्यू मांगे इस रिहाई का। जो 11 के 11 को रिहा किया गया है, आप एक जुडिशियल रिव्यू मांगे। क्या आप और बिल्किस जुडिशियल रिव्यू मांगेंगे? जी, अभी हम जुडिशियल रजिस्टर के बारे में, क्योंकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो उनके पर जो कार्यवाही की है, कैसे की है, वो बिल्कुल हमारे पास कोई उनका आधार नहीं है, और जब तक वो आधार हमारे पास लीगली हमको पास नहीं आएगा और उसने देखेंगे नहीं, तब तक हम क्या बताना है वो अभी आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इसी वजह से हम 2 दिन से कह रहे हैं कि इस वक्त हम वो चीज नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पेपर ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कैसे मालूम पड़ेगा हमको? याकूब जी, जब ऐसी चीजें होती हैं ना तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ जाती हैं, घर आती हैं, ढांढस बंधाती हैं। अब इस बार ज्यादा, एटलीस्ट जो गुजरात में है, हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ ज्यादा कहते नहीं देखा। किसी ने आपसे बात की है? किसी ने आपका संयम बढ़ाया है? हम कोई पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास कोई पॉलिटिक्स पार्टी की बात ही नहीं है, और हम कभी ये चीज करना ही नहीं, ये नहीं कर रहे।
क्योंकि हम अभी हमारी खुद की जो जिंदगी जीने का जो भय पैदा हो गया है उसके उसके ही सवालों में घिरे हुए हैं। एक आखिरी सवाल करूंगी याकूब जी, जो पूरा हिंदुस्तान था, जो पूरा भारत था, वो जब निर्भया कांड हुआ एकजुट हो गया और फांसी की सजा मांगी जो दरिंदे थे निर्भया कांड में। आज आप, क्योंकि आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देशवासियों को वही संदेश रहते हैं कि जो बिल्किस के साथ जो आज हुआ है ये हमारे देश की महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। याकूब जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और अगर आप घर जाएं वापस और बिल्किस से बात करें तो ये जरूर कहिएगा कि बहुत लोग हैं जो भारत में हैं जो सॉरी कहना चाहते हैं, उनसे माफी मांगना चाहते हैं जो उनके साथ हुआ और जो अब उनको देखना पड़ रहा है, तो माफी मांगते हैं उसकी। बहुत लोग हैं जो माफी मांगना चाहते हैं, आप बताइएगा उन्हें। बहुत शुक्रिया याकूब जी हमसे जुड़ने का। वांट टू कट अक्रॉस इमीडिएटली राइट नाउ टू बीजेपी एमएलए सीके राहुल जी। Viewers, why am I cutting across to Mr. Rahul ji? In the 11 committee which was constituted at the behest of the Supreme Court, because the Supreme Court had there was a plea which was given by one of the 11 to the Supreme Court for premature release. The Supreme Court had directed the plea to the government of Gujarat and said either reject or accept this plea. Now a committee was made. In that committee, unanimously, that committee went ahead and said that all these 11 gang rapists, murderers of even a 3-year-old child, murderers of 14, all of those that you see, 11 have murdered 14 people, including a 3-year-old child, gang raped 3 women. Well, the committee of 11 unanimously decided that they'd done enough time that they were freed. One of the members is a BJP MLA. In fact, there were 4 BJP leaders in this committee out of 11. One of them is joining us live. I have with me Mr. C.K. Rahulji. He's an MLA of the Bharatiya Janata Party. राहुल जी, एक सवाल आज हिंदुस्तान करना चाह रहा है आपसे। किस बिना पर राहुल जी, आप एक एमएलए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, किस बिना पर यह डिसीजन लिया गया 11 के 11 मेंबर, और हम वो ग्राफिक प्ले करेंगे कि कौन थे वो 11 मेंबर जिन्होंने रिहाई दी है, प्रीमैच्योरली रिहाई दी है, टर्म एंड होने के पहले रिहाई दी है इन 11 दरिंदों को। क्या सोच के आपने डिसाइड किया राहुल जी कि छोड़ देना चाहिए, बहुत कर लिया इन्होंने? तो क्या हुआ इन्होंने अगर 14 लोगों को मारा? तो क्या अगर इन्होंने बिल्किस का गैंगरेप किया, उसकी मदर का गैंगरेप किया, उनकी बहनों का गैंगरेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची मारी? आई एम द वन ऑफ द मेंबर ऑफ कमिटी। इसमें कमिटी के बारे में हम सभी साथ मिलके ये जो सरकार की गाइडलाइन थी कि यदि 14 साल से ज्यादा जेल में जो सजा भोग रहे हैं उसको निजात करने के लिए सब जेल का और जेल का नियम के वजह से कमेटी ने ये निर्णय सभी मिलकर किया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ना, उस पर अलग सवाल किए जा रहे हैं। चलिए, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि आपको इसका एक हिस्सा बनाया गया। क्योंकि एक सवाल ये भी है कि कैसा है कि 11 की कमेटी में 4 बीजेपी मेंबर्स हो गए। पर वो छोड़िए, मैं आपसे एक और सवाल वही पूछूंगी कि जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, तो किस बिना पर आप लोगों ने ये सोच लिया कि नहीं, हो गया, 14 साल 15 साल कर लिए किसी ने, अब छोड़ दिया जाए? उसकी बिहेव और जो कुछ भी था ये सरकार के नियमों अनुसार, जेल के नियमों अनुसार ये हमारे कमेटी ने तय किया। इसमें जो कुछ किया है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में वो निर्णय लिया है। राहुल जी, देखिए, नियम अनुसार आपने किया है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा, ये हम कह रहे हैं आपने नियम अनुसार किया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये नहीं कहा था ना कि आप करिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि देखिए, हमारे पास प्ली आई है इन 11 में से एक की, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 14 साल के ऊपर कर लिया है जेल टर्म और इनको प्रीमैच्योर अपने टर्म एंड होने से पहले रिहा किया जाए, और ये गुजरात गवर्नमेंट कमेटी बनाए और डिसाइड करे कि रिहाई दी जाए या नहीं दी जाए। अब सवाल ये है राहुल जी, आपने कैसे रिहाई दे दी? क्योंकि आप मना भी कर सकते थे नियमों के अनुसार, आप कह सकते थे देखिए ये दरिंदे हैं, इन्होंने 14 लोगों को मारा है, इन्होंने गैंगरेप किया है, इन्होंने एक 3 साल की बच्ची का सर कुचल दिया है,
इनकी रिहाई प्रीमेच्योरली नहीं होनी चाहिए, मना कर सकते थे नियमों के अनुसार, क्यों नहीं किया? 14 साल सतत जो जेल में रहे, इनके बारे में उनकी जो बिहेव होती है, उनके आगे और पीछे का जो कोई गुनाह नहीं साबित होता। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सरकार को निश्चित किया कि कमेटी सरकार ने बनाई, सरकार में ये दो लोग थे कि सभी मिलके जो कुछ उसकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के बारे में सभी हमें कमेटी मेंबर ने निर्णय लिया है और सरकार ने निर्णय भेजा, इस वजह से उसकी छुट्टी हो गई। देखिए राहुल जी, ये गलत बात है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश नहीं दिया, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने आपको चॉइस दी थी कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते आप रिजेक्ट कर सकते थे। ये सवाल बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले लोग, बिल्किस बानो, बहुत सारी महिलाएं जो कोर्ट में जा रही हैं, पूछ रही हैं, बहुत सारे भारतीय आपसे कर रहे हैं सर। सरकार का नियम था, इनके वजह से कमेटी बनाई, इसमें हमारे कलेक्टर भी थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे और डिस्ट्रिक्ट जज भी थे और सभी और जेलर भी थे। ये रूल्स की वजह से उसका कोई भूतकाल जो था, इसमें कोई ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं थी और उसका जो 18 साल का जो जेल का जो टाइम था, इसमें वो उन लोगों की सभी की जो बिहेवियर थी वो बहुत अच्छी थी। और वैसे रूल के बारे में जो कमेटी ने लिया कि सरकार के रूल की वजह से लिया है, इसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। सर देखिए, बिहेवियर थी वो बहुत अच्छी थी 14 साल, पर बलात्कारी रहता है, मर्डरर रहता है। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, आपने हमारे सवाल लिए। आपने बस एक चीज बोली है कि नियम अनुसार किया है। सही कह रहे हैं, नियम अनुसार किया है, नियम अनुसार आप नहीं भी कर सकते थे, ये आपके हाथ में था। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आई वांट टू कट अक्रॉस राइट नाउ टू शोभा गुप्ता. Now, she is the lawyer of Bilkis Bano. She is joining us live as well as we have Shri Raj Nair, spokesperson VHP. Mr. Nair, if you'd give me just 3 minutes, I'll come to you. I want to cut across to Shobha Gupta first. Ms. Gupta, my first question is only this, that Bilkis Bano, in her right, can now go for a judicial review of the premature release of these 11 men. Is that going to be exercised? So you are aware that there is a process of judicial review to any executive order, which if she wished to, she can. If the next question is she going to exercise? I'm not sure for it. Will you advise her, Gupta ji? Will you advise her, ma'am? That I would advise her to wait for the government to take a call first, because she should, according to me, the last person going to court for this thing. She has already put up a very, very tough battle. It's been 17 years for her, 20 years by now for the whole process. The government is a major stakeholder for any for law-making process or law and order maintaining agency is the government. For any penal exercise, government is a major stakeholder. The cases are being fought by governments as states. So it's like state versus X. So I would advise her to wait for, I'm sure, if I am sure government would be taking up action. Ms. Gupta, you are sure that the government will be taking action at the behest of what? Because the government has taken action, which No, I'm so sorry. Government has not taken any action. Accused have asked for their application to be considered. The committee has. Government are looking into all that uproar. Maybe, it's not as if government cannot cancel the order or cannot recall it, cannot ask for a reconstitution of the committee. If we have two governments, state government I'm saying central government can go in appeal, challenging that order. CBI can challenge that order. CBI, after all, was the prosecuting agency. So you're hoping that happens. Three of them are the major stakeholder. Constitutionally, my rights guaranteed under Article 21. My right to life. My means each one of us or any one of us, including Bilkis. It has to be. Constitution guarantees that, and that is ensured by the government. Ms. Gupta,
I have no reason. Right. I have no reason to doubt that government would not be going and government would be accepting this order or sitting with this order, or sleeping over with this order. I am not going to even think this. I am more than sure. Right. Like, we are troubled. You are troubled. I've seen your reactions. I was hearing you, and these were tough reactions, and rightly so. Ms. Gupta, I'll ask you one question. Ma'am, before I let you go, I'm going to ask you one very quick question. Now, the committee, are you going to challenge the committee which was constituted? Because technically it has 4 BJP leaders, and importantly, one of the BJP leaders is a Godhra carnage eyewitness. So there is a conflict of interest somewhere there. See, you possibly have the information of the composition of committee. We do not have yet officially. And we, the local lawyers over there, they are trying to get the copy of everything. Okay, my last question. Right. All the more reason, for the particular stakeholders, that is the first and the major stakeholder, the government, to go against that also. My last question, Ms. Gupta, is, have you spoken to Bilkis? She released a statement through you last night. What is her mental state right now? You heard Yaqub. He was echoing her sentiments completely. She stated in her statement, which is very, very clear. If we are disturbed like this, what position she would be in. She has grown up girls also now. Earlier she was all alone and the child in her womb. Right. She had, Yaqub and she, with the small children, have lived a life of nomad for last 17 years. Right. Ms. She Gupta, can't even imagine to relive. Nobody can imagine that, ma'am, and I wish you fortitude and good luck to fight this battle for Bilkis Bano. There are many in the country that support you. Appreciate you joining us, Ms. Gupta. I want to cut across to Shri Raj Nair, spokesperson VHP. And Mr. Nair, the only reason we've got you on the show, sir, is, would you want to make any amends? Because these 11 barbarians, when they were released, were taken to the local VHP office and celebrated and honored. Well, there was no celebration, absolutely not. There was no celebration as such. They were released, there was a process, and I would like to say that this nation has got a excellent judicial process. We have seen even the likes of Kasab and Afzal Guru who got the opportunity to go in for a trial, and they were convicted. Here in this case also, they were convicted. They were in prison for 14 long years, and after the due judicial process, they were released. So maybe their near and dear ones may be happy. That's it. So the picture had come from the VHP office. It is the VHP local office, Vishwa Hindu Parishad local office. They were garlanded in that office. No. There was no garlanding. There was no celebration as such. There was garlanding. There was no celebration. Fine, but there was garlanding. There was feeding of laddus, sir. And see, let me make it very clear. First of all, there was no celebration. Now, these people have undergone 14 long-term imprisonment, and they were released after due process. Now, so in many cases, say, even in Ajmer case, where young girls were raped, and when the convicts were released, nobody. Now, this is a selective media trial. I am not going behind the case and what happened, but in this case, this is purely a media trial. They have suffered. They were convicted 14 long years. They were in prison. They are out. I'd hark back to country. I appreciate what you have to say, Mr. Nair. Take a point taken, but I hark back to Nirbhaya. Many in the country at that point of time had stood by. Most of the country had stood by Nirbhaya. Some of the likes of you had called it a media trial. Some cases that line blurs. Even in Bilkis Bano, it's pretty much that case. Mr. Nair, Mr. Nair, what we were hoping is that you'd come and at least say that what went down was wrong. It hasn't happened. But I thank you for taking the time out and joining us. With that, I want to close this edition of To The Point. We leave it away from the politics, the religion aspect of it all. We leave it for our viewers to decide. Will you stand by Bilkis Bano? Because if you don't stand by Bilkis Bano, you never stood up for Jyoti Pandey or Nirbhaya. Thank you for joining us. Up next is Rahul Kanwal.